Hello, hi, namaskar. Welcome to UPSC Achievers Academy. My name is Pavitra Kumar Nayak, and in today's lecture, we will start with Indian economy for prelims. We will try to complete the entire Indian economy in 12 to 15 lectures, and this series is completely free with our test series. If you have not enrolled yet in our test series, you can watch first 3 lectures, which is completely free. So coming to the syllabus for prelims, it is comprising of 14 topics, starting with the characteristic of Indian economy, then national income accounting. In characteristic of Indian economy, we will study how Indian economy is different from other types of economy. In second chapter, we will study about different methods of calculation or calculating national income. Along with that, we will also study about the differentiation between growth and development. Along with, we will also study about sustainable development, which is one of the favorite topic for OPSC. In each year, they will ask one question from this area. The third chapter is about inflation. We will study what is inflation, what is deflation and disinflation, stagnation. We will study the causes, we will study the types like walking, creeping, galloping, hyperinflation, and we will take or we will see two types of measures. One is your monetary, one is your fiscal. The monetary measures that is taken by RBI and fiscal measures is taken by the government to control inflation. Chapter 4 is about growth and development. Number 5 is planning or planning commission. The different types of plan before independence and after independence, how the plans are being formulated, what is the model, what are the drawbacks, why we came from this planning commission to Niti Aayog. Then we will study about the composition of Niti Aayog, the functions of Niti Aayog, and also the difference between erstwhile planning commission and the present Niti Aayog. Then we will study about the monetary policy and fiscal policy. Moving to chapter 7 is your money and banking. Here we will study about different banking structures that exist in India, how the banking structure came into existence form. Along with, we will study about different term of money, that is M0, M1, M2 and M3. High powered money to broad money. We will study everything. Then we will study about money market and capital market. Basically, money market deals with your banks and financial institutions, whereas capital market is basically dealing with SEBI is the
supervisory authority for capital market. Here we will study about the terms like IPO, EIPO, rights issue, FBO, all these terms, and we will understand how it is different in their operation or in their nature. Chapter 9 is about budget and taxation. We will study how the budget is being formed, how the budget is being placed in the parliament, what is the timeline, and what are other bills that is presented with the budget, and also we'll study about taxations including your GST. So GST is a high yield area from which OPSC asks questions. Then we will move to international trade and balance of payment. How India is dealing with this balance of payment, the forex reserve, and other terms that is related with balance of payment, how to deal with that. Then different sectors of Indian economy, like the primary sector, secondary, tertiary, quaternary, and quinary. We'll move to international financial institutions like IMF, International Monetary Fund, and World Bank. And we can expect every year they are asking some questions from these financial institutions, not only IMF and World Bank. They can also ask you questions from AIIB, NDB. We need to study about different types of bond. Fine. Then the contemporary issue in economy. What is the schemes? What is the policies like John Bishwas bill? John Bishwas. What are the schemes? What are the policies that is undertaken by the government to address the contemporary issues in Indian economy, like the bottlenecks? Everything we will discuss in chapter number 13. And in chapter 14 we will study about economy of Odisha. Along with we will discuss the budget and economy survey. So these 14 chapters are the syllabus for Indian economy. Let's start with the first chapter, that is characteristic of Indian economy. The very first point that you need to remember is that Indian economy is mixed in nature. That is, there is coexistence of both public and private sectors. In the same sector, the public, like the government, is also working, along with some private entities are also working. India follows a indicative planning. What do you mean by indicative planning? Okay, this question is asked in 2019, I guess. This is which kind of Indian economy is. Okay, but this is a basic questions. They are now moving towards more difficult levels. So we can't expect this kind of question will come again. Still, we should know. India follows indicative planning. Indicative planning means the government will prepare broad guidelines. Broad guidelines are prepared by the government, and the private player will take part and provide service to the people. What is the role of government? Government act as an enabler or facilitator than just a regulator. We need to understand what do we mean by regulator.
Regulator means controlling something. Controlling something. Like we have Central Pollution Control Board and State Pollution Control Board. What they do? If any industry is polluting more than the prescribed norm, they can close the industry. That is their power. They can regulate. Or if you are not riding the vehicle, ଯଦି ତୁମେ ବାଇକ୍ରେ ଅଛ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନା କିମ୍ବା କାର୍ରେ ଅଛ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ, so you will be fined. That is the act of regulation. Then what is enabler or facilitator? Enabler or facilitator means if any company wants to come and set up their industry, let they choose Odisha to set up their industry. So Odisha government will provide them basic infrastructure like roads, electricity and clearance so that they can come and set up their industry. So for that, the government of Odisha is having a separate branch that is known as IDCO, Industrial Development Corporation of Odisha, that help the big or multi-billion projects to acquire the land, then provide them basic connectivity like with roads, or if there is requirement they will extend the railway line, providing basic amenities like electricity, water, so that the industry can set up and start their production. If we'll talk about the orientation of Government of India, our orientation is moving towards capitalistic society with social upliftment objectives. Previously, we were socialist in nature. Our socialist is not like China, rather our socialist is democratic socialist, in which government control maximum things like the nationalization of banks, nationalization of Indian Airlines. But now the government is moving towards capitalistic society. In capitalistic society, what will happen? The price of any commodity or any service is decided by the market, not by the government. Like in USA is a fully capitalistic society, but we are different from them because we have our objective of social upliftment. In India, the society is not egalitarian, or there is mismatch, or there is disparity in different societies in terms of economy, in terms of income, in terms of standard of living, education, awareness, everything. So this is the government objective, to uplift the vulnerable section of society. Then coming to the role of government in terms of Indian economy, the first role is government is acting as facilitator. As we have discussed, the role of government is to facilitate, not only regulate. They will provide basic facilities to any organization or any industry that is being, or that will set up their industry in their premise. The second government role is mass benefit or social uplift. Whenever you will learn about social uplift, always think about the vulnerable sections of the society, and if we can develop them, then the society can be automatically developed.
Who are these vulnerable sections? Particularly the women, the children, poor people, elderly people, tribals, etc. And the third role that is played by government is protector of society objectives. Whatever the objectives of the society that is mentioned in DPSP, the government tries to implement that by bringing new laws and to protect the liberty of every individual. Fine. The second characteristics of Indian economy is it is agrarian economy. In India, nearly 50% of population is employed in agriculture, whereas the contribution of agriculture to GDP is only 17%. In terms of employment, it is highest, but in terms of its share to GDP is one of the lowest. OPSC maybe last year ଗୋଟେ question ପଚାରିଥିଲା, what is the share of agrarian sector to the Indian GDP, whether it is increasing, whether it is decreasing, or whether it is fluctuating around a certain point. The correct answer is it is actually fluctuating between 14 to 18 or 19 sometime. So in this lecture, जहाँ भी important points अच्छी जो थ्रू OPSC question पचार थिला, and what are the topics from which OPSC रू question आसपारिबो, the expected topics, I will highlighted that thing also. What are the main issues in agriculture? One is seasonal employment. Work is available only during cropping and harvesting. जो माने चाष करछंती जेतले क्रॉपिंग सीजन थाए लाइक पैडी और धान, जेतले पैडी सीजन अच्छी चाष के माने धान चाष कौन करा जाए, एमती गोटे फील्ड तैयारी करिकी फास्ट तादरे पैडी और सीड सब लगे देबे, एमती माने धान को नेकी बिंची देबे तादरे, तापरे बिंचिला परे किछि दिन परे छोट छोट गछ हबो, फाइन धान रे छोट छोट गछ हबो, तापरे से गछ को नेकी बड़ फील्ड रे डिस्टेंस रखिकी तांकू लगेया पड़े. सो एई काम पई लोक दरकार. जेतले धान कटा हबो हार्वेस्टिंग सीजन 3-4 मंथ परे से तो लोक दरकार धान काटिया पे. बट इन बिटवीन दैट पीरियड जेतले क्रॉपिंग हे गला, हार्वेस्टिंग हेइनी किंबा क्रॉपिंग हार्वेस्टिंग सरी की सीजन खत्म हे गला, व्हाट दे विल डू, दैट इज ए बिगर इशू इन एग्रीकल्चर. जदि भी आम से एम्प्लॉयमेंट कथा कहते दैट इज ओनली सीजनाल, कौन सीजन रे काम मिल लाइक दिस 2 सीजन्स एंड अदर टाइम दे आर अनएम्प्लॉयड. द सेकंड थिंग इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. माने जनकर लेट सपोज 2 एकर जमी थिला, जेतले तांको बापा डेथ होगला, 2 भाई के भितर जमी डिवाइड होगला, 1 एकर 1 एकर, ठीक अच्छे. 1 एकर जमी रे माने एटी गोटे फैमिली थिला, बर्तमान 2टा फैमिली गला, इट इज फैमिली 1, इट इज फैमिली 2. लेट सपोज फैमिली 2 रे 2 भाई थिले, जड़े भाई गाँव में चाष करथिला, जड़े भाई विदेश जाएगी किसी भी माने विदेश मीन्स माइग्रेशन टू अदर प्लेसेस, ठीक. सो गोटे भाई गोटे एकर जमी चाष करथिला, लेट द प्रोडक्शन फ्रॉम दिस 1 एकर ऑफ लैंड इज 2 क्विंटल.
आउ जने भाई जे माइग्रेट होगी अलग जगह काम करथिला सी भी रिटर्न करिगला कि मते भी गाँव रही काम करे अच्छी सी भी आसिक से 1 एकर जमी काम कला जिते जड़े भाई काम करथिला द प्रोडक्शन वाज 2 क्विंटल जिते सेकेंड भाई आसी काम कला देन ऑल्सो द प्रोडक्शन इज 2 क्विंटल तो ये प्रोडक्शन किसी बढ़ला कि whether there is marginal productivity whether there is an addition of any production गोटे भाई काम करथिला 2 क्विंटल एबे दी भाई काम कर सेम हार्वेस्ट 2 क्विंटल ताने दी जन लगुच कि दे आर एम्प्लॉयड से माने काम कर बेकार बसना बट दिस इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कारण दी भाई जगह गोटे भाई को हटेदेले भी प्रोडक्शन किसी भी चेंजेस आसबनी मोर पीपल आर वर्किंग देन रिक्वायर्ड कारण गोटे एकर गोटे लोक ही काम कर दीजन लोक रखिकी समान प्रोडक्टिविटी में जदि आम कर देन वी आर जस्ट वेस्टिंग वन लेबर द मार्जिनाल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 0 माने ये जो सेकेंड भाई तार आसिक काम कला सी जो तार मेहनत लगेला तार जो मार्जिनाल प्रोडक्टिविटी आसिया कथा ये किसी भी चेंजेस तो होनी तो 2 क्विंटल आगे भी थिला एबे भी 2 क्विंटल दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन द प्रोडक्टिविटी सो द मार्जिनाल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 0 adding more labor does not increase production एमती बहुत सारा सेक्टर अच्छी जोटी कौन होची जोटी डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होची लगुच कि दे आर वर्किंग से माने अनएम्प्लॉयमेंट नहांती बट इफ यू लुक एट द मार्जिनाल प्रोडक्टिविटी जमीती गोटे भाई काम करथिला जदि 2 क्विंटल आसुला जदि 2 भाई काम करेंगे ताले 4 क्विंटल आसिया कथा जे 3 भाई काम करेंगे ताले 6 क्विंटल आसिया कथा प्रोडक्शन बट दी जन काम कला परे भी 2 क्विंटल ही आसुची दैट मीन्स वन लेबर इज वेस्टेड ही माइट थिंक आई एम ऑल्सो एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी बट तार प्रोडक्टिविटी इज 0 दैट इज द 2 इश्यूज इन एग्रीकल्चर और भी बहुत सारे इश्यूज अच्छी लाइक इश्यूज इन फर्टिलाइजर issues in post harvest losses then issues in irrigation बहुत सारा issues अच्छी but आमे जेहेतु we are just in a discussion phase we will discuss only 2-3 points जितना आमे agriculture पढ़िबा we will in detail we will discuss that the third characteristic of Indian economy is service led growth service led growth माने कोन as you know there are different types of or different sectors of economy first sector or the primary sector जोटा कि एग्रीकल्चर हो गला फिशिंग आउ कौन हो पार माइनिंग व्हिच इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द नेचर एग्रीकल्चर हो फिशिंग हो माइनिंग हो जोटा आम माने जोटा आम कर सहित नेचर ऊपर डिपेंडेंट होगी काम कर दैट इज योर प्राइमरी सेक्टर देन सेकेंडरी मीन्स द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स लाइक स्टील इंडस्ट्री लाइक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ये सब आसला तुम सेकेंडरी द थर्ड सेक्टर इज टर्शियरी और सर्विस लाइक एटी स्टील प्रोडक्शन है स्टील को बिकिया भी अच्छी ऐसा नो तो सेठी जो सेल्स टीम रही बेसिकली सर्विस सेक्टर इज रिलेटेड टू आईटी इंजीनियर्स देन डॉक्टर्स लॉयर्स ये सब बोले तुम टर्शियरी और सर्विस सेक्टर तो सर्विस सेक्टर रे particularly this IT and ITES they are contributing 57 to 50% 58% of the GDP এটা भी क्वेश्चन ऑलरेडी ओपीएससी पचार सारी सो यू जस्ट रिमेंबर सर्विस सेक्टर contributes approximately 57 to 58% of India's GDP. The fourth characteristic, India or the Indian economy is now termed as emerging economy. Emerging
economy or fastest growing. Previously it was fastest growing ଯେତେବେଳେ ଆମର growth rate ଅନ୍ୟ country ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଥିଲା, that is fastest growing, but now emerging means ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି or we can very we are just crossing other economy with a very fastest or very fast speed. ଯେମିତି we are 6th largest economy just 5-6 year ପରେ ପୂର୍ବରୁ. Now we have third largest economy. Okay, this is wrong. We are now third largest economy by କାହାକୁ ଆମେ କାଟିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଜାପାନକୁ କାଟିକି ଆସିଛନ୍ତି. Now US, then China, then here India, then Japan, then Germany, or ଏଠି UK ବି ଆସିବ, right? So India is still a developing nation, but it is continued or it is seen as an emerging economy. During COVID-19, there was a negative growth, but in 2021, again, India gained its momentum. Global standing मन रखियो, US number 1, then China, third is India in terms of GDP, not in terms of माने दी प्रकार अच्छी गोटे हला नेशनल जीडीपी रे आम आगे अच्छा. बट इफ यू लुक एट द पर्सनल इनकम और इंडिविजुअल इनकम तमें आम बहुत पछरे आसिया बिकॉज द डिस्पैरिटी बिकॉज ऑफ द डिस्पैरिटी बिटवीन द इनकम. जो आम ऑक्सफाम रिपोर्ट पढ़ा आम देखा अराउंड 1% ऑफ पीपल होल्ड 40% ऑफ नेशनल वेल्थ. तो जो एत अधिक डिस्पैरिटी आम देश अच्छी, सो इन टर्म्स ऑफ पर हेड और इन टर्म्स ऑफ इनकम और इंडिविजुअल इनकम आम बहुत पछर अच्छा, बट इन टर्म्स ऑफ नेशनल वेल्थ आम थर्ड लार्जेस्ट अच्छा. द नंबर 5 इज लो कैपिटल आउटपुट रेशियो. गोटे पेन तुम तैयारी कल, गोटे पेन तुम तैयारी कल 10 टकर तैयारी होगा. यदि 2टा पेन आम तैयारी करचु सेटा 18 टकर तैयारी होगा कथा. यदि हम 3टा पेन तैयारी करचु सेटा 25 टकर तैयारी होगा कथा. बट इंडिया रे कौन होची, गोटे पेन 10 टंका, 2टा पेन 21 टंका और 20 टंका, 3टा पेन 30 टंका. फॉर दैट रीजन आवर कैपिटल इज इनएफिशिएंट. जितने आम कैपिटल कथा कहते, इफ यू लुक एट एनी इंडस्ट्री इट इज ऑफ 2 टाइप्स. वन इज योर परमानेंट, वन इज योर ऑपरेशनल मेंटेनेंस. परमानेंट माने कौन, तुम पाखे 10 जन एम्प्लॉय काम कर, whether they will produce 10 quintal, whether they will produce 12 quintal, this salary will be same. बट जो आम प्रोडक्शन बढ़िया आमर कौन हम ऑपरेशन मेंटेनेंस से टी अधिक एक्सट्रा खर्च हम. बट आज दिस पार्ट इज फिक्स्ड, और जोटा आम फिक्स्ड पार्ट कहते, जेहेतु फिक्स्ड पार्ट आमर गोटे प्रोडक्शन हो कि 2टा प्रोडक्शन हो सेम रोचे. फॉर दैट रीजन जो आम अधिक प्रोडक्शन करवा आमर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हवा कथा बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट. बट इंडिया रे सेमती होनी बिकॉज ऑफ सब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर आमर कैपिटल इनएफिशिएंट हो रही जाउछि. कमिंग टू नंबर 6 of characteristic of Indian economy, it is low saving and investment. गोटे कंट्री रो पॉपुलेशन जेतेबेले से माने इनकम बढ़िबो, आफ्टर फुलफिलिंग देयर नीड्स दे विल गो फॉर दिस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. जेहेतु इंडिया रो इनकम कम अच्छी, सेविंग्स कम, जेहेतु सेविंग्स कम obviously investment will also less. High demand leaves less money to save, spending and luxury attitude
इज इंक्रीजिंग. इंडिया रे गोटे एटीट्यूड अच्छी कि 2000 टंका भी घड़ी आसो रिस्ट वाच आउ 20,000 भी रिस्ट वाच आसो. बट आज द सैलरी विल इंक्रीज पीपल विल प्रिफर मोर लग्जरी गुड्स rather than they save the money and invest it, they spend more money on luxury goods. जेहेतु लग्जरी गुड्रे अधिक पैसा खर्च होची सो सेविंग्स बिल्कुल कम हो जो सेविंग्स कम हम ऑब्वियसली द इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो लेस. देन नंबर 7 इज हाई डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी. वाइड गैप बिटवीन रिच एंड पुअर. As per the Oxfam survey data of 2025, top 1% of Indian hold 40.5% of total national wealth. गोटे परसेंट लोक से जब 40% वेल्थ रखुंट ताले बाकी 99% को बाहर के रहा ओनली 60%. सो देयर इज वे वाइडर गैप बिटवीन देम. टॉप 10% होल्ड vast majority of wealth. Bottom 5% have minimal share. Bottom 5% बोधे bottom 50% around 16% wealth ताक बाहर अच्छी. सो जिते तलू तलू को आम पॉपुलेशन इनकम लेवल रे जिबा ताक बाहर wealth accumulation आउरी कमी कमी जीव. सो दैट इज द disparity between have and have nots. In 2022 the richest 98 Indians owned same wealth as 55.2 crore people. बुझे बटम 55.2 करोड़ पीपल को पाखर जी पैसा अच्छी टॉप 98 इंडियन के पाखे से पैसा अच्छी. सो यू कैन इमेजिन द डिस्पारिटी लेवल इंडिया रो. ओके एबे बर्तमान जहाँ जो जीडीपी अच्छी इट इज 4.5 ट्रिलियन. 4.5 ट्रिलियन माने नेशनल वेल्थ. 55.2 करोड़ जी 98 इंडियन से. देन नंबर 8 इज हाई अनएम्प्लॉयमेंट और जॉबलेस ग्रोथ. जिते आम कहते आम 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी रु 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गले व्हेयर इज द जॉब. मार्केट आमको जॉब देखा कि स्टिल इंडिया इज फेसिंग ए हाई लेवल ऑफ जॉब स्कार्सिटी. बहुत सारा अच्छा ना अनएम्प्लॉयड. अनएम्प्लॉयड माने कौन अनएम्प्लॉयड कैटेगरी माने क्राइटेरिया है यू मस्ट सर्च फॉर ए जॉब. तुम्हें जॉब खोजुच यू हैव द क्वालिफिकेशन ताहले आमे कहबा कि द पीपल इज अनएम्प्लॉयड. तुम लाइब्रेरी बस पढ़ुच तुम प्रिपेयर हो दैट इज नॉट अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एल्स. तुम पाखर क्वालिफिकेशन अच्छी बट यू आर प्रिपेयरिंग यू आर नॉट सर्चिंग फॉर ए जॉब. The Indian economy faces a crisis in which the schools has never developed the entrepreneurship mindset and the potential of Indian manpower is being sufficiently not harnessed. माने कौन ना तो आमको स्कूल रे सेल्फ एम्प्लॉयड होवाई ट्रेनिंग वगैरह मिलला ना तो मोटिवेशन दिगला ना तो इंडियन जॉब मार्केट इज रेडी टू ऑब्जर्व दिस मच मैन पावर. इंडिया रो माइंडसेट लोक को चेंज करानी जेहेतु माइंडसेट चेंज करानी पीपल विल जनरली गो फॉर जॉब. एंटरप्रेन्योर होगा लोक चाहिए जो जॉब करने चाहिए तो जॉब मार्केट से जॉब भी तो थी दरकार. सो ना तो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट आम डेभलप कर ना तो आम वी आर डेभलप द पोटेंशियल टू ऑब्जर्व दिस मच मैन पावर. देन इसेंट्रिक और पिकुलियर ग्रोथ. एग्रीकल्चर रे 50% लोग काम कर बट इफ यू आर लुक एट द जीडीपी शेयर इट इज ओनली 17%. 50% लोग काम कर बट जीडीपी शेयर इज ओनली 17%. देन देयर इज स्ट्रक्चरल इश्यूज लाइक नो सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. आम देखले कि प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर. सेकेंडरी सेक्टर जोटा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इट हैज द एबिलिटी टू ऑब्जर्व ओके जोटा आम हेवी इंडस्ट्री अच्छी
they can absorb large unskilled and semi-skilled people. सेमान पाखरे कैपेसिटी अच्छी से सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड रे लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे पारिबे बट इंडिया रे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज नॉट रीच दैट स्टेज रादर आवर सर्विस सेक्टर बहुत आगू पड़ेगा बट जोटा अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोक मानक जॉब दे पारथांदा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दैट इज नॉट फुली डेवलप्ड. The service sector रे कौन प्रॉब्लम अच्छी इट हैज ए लिमिटेड कैपेसिटी टू ऑब्जर्व सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर जोटी तुम आईटी सेक्टर देखियो ऑलमोस्ट ऑल पीपल आर स्किल्ड से माने कोडिंग वगैरह शिखिचंती एंड दे आर वर्किंग सेठी केते जन लोकन को जदी से गोटे इंडस्ट्री माने गोटे ऑफिस रे 100 आईटी इंजीनियर्स आर वर्किंग और लेट सपोज 200 आईटी इंजीनियर्स आर वर्किंग सेठी अनस्किल्ड माने द जॉब ऑफ एनी जो रहिले पियन वगैरह रहिले सेठी केते जन लोक को चाकरी मिल परिबो. सो इट हैज ए लिमिटेड कैपेसिटी. दैट लिमिटेड कैपेसिटी इज नॉट सफिशिएंट फॉर द इंडियन अनएम्प्लॉयड youth. Then there is another characteristic is regional disparity. Due to colonial factor and other, some areas like Mumbai, Kolkata, एमाने बहुत अधिक like Delhi, they have reached or they have growth at a faster space than other region. तो से माने ग्रोथ करी गले किछि हिंटरलैंड वगैरह रहले जो माने ग्रोथ करि पारलेनी. सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल द स्टेट्स और regions. Then 3D कौन गोटे है डेमोक्रेसी. इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. इंडिया हैज द लार्जेस्ट डिमांड बिकॉज वी हैव 1.4 बिलियन पीपल एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड. डेमोग्राफिक डिविडेंड मीन्स द वर्किंग एज पीपल केते अच्छे 15 नु नहीं 64 एज ग्रुप रे जति लोक अच्छे इंडिया रे दैट इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. तो आम पाखे डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छी. But if we cannot utilize that demographic dividend, it will become demographic destruction. Demographic destruction. So till 2055, we have a window to use this demographic dividend and become developed. सेमिति आमर जो गवर्नमेंट रो एम अच्छी by 2036 we will become Viksit Odisha, and by 2047 जेतले इंडिया 100 year complete करिबो इंडिपेंडेंस it is aim to become developed nation. Okay, so these are the characteristics of Indian economy. We will stop it here. In the next class we will study other characteristics of Indian economy and move forward. Thank you for watching the lecture. Have a great day.